Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Our today's topic of discussion is blood and its component. Blood is a connective tissue which connects all our body organs. It is slightly alkaline in nature, having a pH of 7.4. If we talk about adult human being, in an adult human being, about 5 to 6 liters of blood is present. It may vary from person to person. If we talk about its process of formation, we call it hemopoiesis. Hemopoiesis is the process of formation of blood. It varies from embryo to the adult human being. If we talk about embryo, in case of embryo, blood is formed within the liver. So we can say in embryo, liver is hemopoietic organ. Here, the process of formation of blood occurs. If we talk about a child, birth के बाद चाइल्ड में जब हम बात करते हैं इन चाइल्ड ब्लड इज फॉर्म्ड इन ऑल बोन मैरोज आर प्रेजेंट विद इन द बोन्स ठीक child in case of child blood is formed in all the bone marrows present within all the bones. If we talk about adult human being, in case of adults blood is formed only in case of bone marrows which are present in the long bones. In case of adults, bone marrows, but in long bones. So we can call liver and bone marrows are the hemopoietic organs in which the formation of blood occurs. Hematology is the study of blood and its component. If we talk about its components, the blood have two different types of components. These are plasma and blood cells, or also known as blood corpuscles. Blood cells or blood corpuscles. If we talk about blood plasma, it forms 55% of our blood. It forms 55% of our blood. It is slightly alkaline like our blood. It is alkaline like our blood. And it is slightly yellowish in color. Plasma is yellowish in color. Its composition is, it is formed of around 90 to 92% of water. Also contains 6 to 8% of proteins. The various proteins present in our plasma are albumin, globulins, immunoglobulins, fibrinogen, heparin, etc. If we talk about the functions of albumin, it does the osmotic balance. It helps in the osmotic balance within our body. Osmotic balance means balance of water and ions. Globulins and immunoglobulins help in the defense mechanism of the body. And fibrinogen help in clotting of blood. Heparin is anticoagulant. Heparin is the reason our blood does not coagulate. Beside water and proteins, plasma also contains some ions. The ions which are present in plasma are calcium ions, sodium ions, chloride ions, and bicarbonate ions. And it also contains glucose, amino acids,
and some waste material. Plasma also contains some nitrogenous waste material. It was all about blood plasma, the blood cells present in our blood are RBCs, WBCs, and platelets. The RBCs are also known as red blood cells and erythrocyte. Red blood cells or erythrocytes. WBCs stands for white blood cells or leukocytes. Platelets are also known as thrombocytes. All these blood cells are formed within the bone marrow and their process of formation will be known by different names. For example, the formation of red blood cells will be known as erythropoiesis. Erythropoiesis. So, the formation of red blood cells is known as erythropoiesis. We talk about the WBCs. Their formation will be known as leukocytosis or leukopoiesis. Leukocytosis or leukopoiesis is the process of formation of white blood cells and formation of platelets is known as thrombopoiesis. पहले हम आरबीसीज डिस्कस करेंगे. आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनती हैं. आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनेगी. इनकी जो शेप होती है दैट इज बाइकॉन्केव. शेप बाइकॉन्केव इसलिए है क्योंकि इनमें सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ऑक्सीजन कैरिंग के लिए. इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इनिशियल स्टेजेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बट जब ये मैच्योर होंगी तो उस टाइम पे न्यूक्लियस यहाँ पे डीजनरेट कर जाता है. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. दे हेल्प इन कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाती है. हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज का जो कलर है वो भी रेड होता है और जो हीमोग्लोबिन है दैट हेल्प्स इन कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज. आरबीसीज हमारी 120 डेज तक ही जिंदा रहती हैं. उसके बाद दे गेट्स डीजनरेटेड. ये डीजनरेट होती हैं स्प्लीन में. स्प्लीन हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसीज डीजनरेट होती हैं और इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. यहाँ पे जाके 120 डेज जब आरबीसीज अपने कंप्लीट कर चुकी होंगी यहाँ पे जाके दे गेट्स डीजनरेटेड. इसी के लिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाएगा. आरबीसीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का होता है. डब्ल्यूबीसीज ये बनती हैं हमारी व्हाइट बोन मैरो और यू विल से येलो बोन मैरो में. व्हाइट और येलो बोन मैरो में आरबी डब्ल्यूबीसीज बनती हैं. न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. इनका कलर दे आर कलरलेस. कलर इनमें कोई नहीं होता. दे आर कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. अब न्यूक्लियस के बेसिस पे या प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स के बेस पे डब्ल्यूबीसीज हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. मेनली डब्ल्यूबीसीज को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. जो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ग्रैन्यूल्स आर द माइन्यूट small rounded structure which help in the synthesis or the formation of various enzymes or proteins within the WBCs. तो granulocytes में granules are present और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है. न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड. नॉर्मली न्यूक्लियस हमारा राउंड होता है, इस तरह से प्रेजेंट होगा. बट इन केस ऑफ
ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूक्लियस में बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे वेरियस टाइप्स हैं। दीज आर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। Eosinophils are present in 2 to 3% of total WBCs. Basophils are 0 to 1%. Neutrophils are around 60 to 65%. Eosinophils are formed within our body when allergic reactions occur. जब भी कोई एलर्जी होगी उस टाइम पे eosinophils बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं. बेसोफिल्स रिलीज करती है हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. जो हिपैरिन है दैट इज एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन एंड एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं ह्यूमन की बॉडी में. जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर. कुछ भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आएगा दे गेट, वो उसको एंगल्फ कर लेती है, खा जाती है उसको. देन आफ्टर हम ग्रैन्युलोसाइट्स पे आते हैं. जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती हैं. ग्रैन्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगी. और ये जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस नॉर्मल होता है. न्यूक्लियस में एक ही लोब होती है. न्यूक्लियस हैव वन लोब. Two types of A granulocytes are lymphocyte and monocyte. Lymphocytes are around 20 to 25% of our total WBCs. Lymphocytes are of further two types, B lymphocytes and T lymphocytes. जो B lymphocytes होती हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएंगी, और जो T lymphocytes हैं they help the B lymphocyte to form antibodies. इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो नॉर्मल राउंड होता है, लार्ज होता है. जो मोनोसाइट्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज किडनी और बीन शेप न्यूक्लियस. मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर. ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको एंगल्फ कर जाएंगी, फैगोसिटिक है नेचर में. दीज आर प्रेजेंट अराउंड 5 to 10%. Last type of blood cells are platelets. They are also known as thrombocyte, और ये ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती हैं. जब भी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है वहां पे ये सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं और ये बनाती है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, जिससे हमारे बन जाते हैं ब्लड क्लॉट. और जो भी चोट लगी होगी जहां से खून बह रहा होगा वो बंद हो जाता है. तो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स.